Hello, everybody. Today, the topic for today is depreciation and disposal of non-current assets. So, depreciation in accounting is a very, very challenging topic. I personally really like it. I thought I'll just cover the basics of depreciation in this video. So, if you see what depreciation actually is that it's a loss in the value of the non-current asset. सही है. तो नॉन करंट एसेट क्या होता है? एनी एसेट. So assets in accounting are those resources which benefit the business. ठीक है. So for example, non-current assets are those assets which benefit the business for more than 1 year. So for example, you can say motor vehicle is a non-current asset. Similarly, a van is a non-current asset. Fixtures non-current asset होते हैं. फिर फर्नीचर नॉन करंट एसेट होता है. इसी तरह हमारी बिल्डिंग्स नॉन करंट एसेट होती हैं. सो दीज थिंग्स वंस यू परचेज दैम दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो इफ़ यू सी पर्सनली अपनी लाइफ में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन करंट एसेट फॉर अस इज़ आवर फोन्स. ठीक है. हमारे फ़ोन के बगैर एक तो हम रह नहीं सकते. एंड देन द बेस्ट थिंग अबाउट our phones is basically it works for more than 1 year. Usually if we purchase an iPhone, we would use it for a longer period, and even if we use it for 2 years, then later we'll get a good price out of it when we sell it in the market. So if you see here, the loss in the value of the non-current asset due to wear and tear and obsolescence. तो जो वैल्यू होती है नॉन करंट एसेट की वो कम हो जाती है ओवर टाइम. वाई कम हो जाती है, क्यों हो जाती है कम? बिकॉज एक तो ये कि उस पर फिज़िकल डिटीरिएशन होती है. वेयर एंड टेयर का दूसरा जो नेम है उसको बुक्स में दे हैव रिटन फिज़िकल डिटीरिएशन. द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन करंट एसेट या फिर उसकी जो बॉडी है उस पर जो है वो फिज़िकल डिटीरिएशन होती है. ऑफ कोर्स कार इज़ अ नॉन करंट एसेट एंड ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दैट हम जब गाड़ी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक तो उसकी माइलेज भी पुअर हो जाती है. एंड उसकी जो द टायर्स एंड द टायर्स दे गो थ्रू द पंक्चर हो जाते हैं, बहुत दफ़ा ख़राब हो जाते हैं. यू नीड टू रिप्लेस द टायर्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नीड अ लॉट ऑफ रिपेयर्स इन द कार्स. इंजन ख़राब हो जाता है, इंजन की एफिशिएंसी पुअर हो जाती है. से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फिजिकल डिटीरिएशन बिकॉज वी आर यूजिंग द एसेट. ठीक है. द अदर थिंग हियर इज़ ऑब्सोलेंस. So obsolescence basically means that when newer technology is introduced, the older technology becomes obsolete. ठीक है. तो older technology की value कम हो जाती है. इसमें जो है वो the best application is a phone. So whenever the new iPhone is introduced, so like iPhone 14 has just introduced, so iPhone 13 की price Apple ने कम कर दी है by $100. So previously in the last month iPhone 13 was for $700 and now it's like $100 less than what it was. So it's because of the new technology that has come in. तो उसकी वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो it has become obsolete. ठीक है. What actually depreciation is, it's an expense. So why do we have to make a provision for depreciation account in accounting. तो प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में ये जो अकाउंट बनता है इसके अंदर हम डिप्रिसिएशन अपनी चार्ज करते रहते हैं एवरी ईयर. सो वाई एक नॉन करंट एसेट ख़रीदना इज़ एन एक्सपेंडिचर, राइट. लेकिन उसको हम पूरा अपनी इनकम स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिखते? पूरा नॉन करंट एसेट खरीद के द होल थिंग, वाई डोंट वी राइट इट इन द एक्सपेंसेस सेक्शन इन इनकम स्टेटमेंट? द रीज़न इज़ दैट वी आर यूजिंग दिस नॉन करंट एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर. तो एक ही साल में हम उसका एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते. तो हमें उसको हर साल थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग टू यूजेज चार्ज करना है. सो इन अकाउंटिंग वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड अक्रूल्स एंड मैचिंग. एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करते हुए हम जो है वो एक साथ नॉन करंट एसेट की पूरी वैल्यू वी कांट टेक इट एज एन एक्सपेंस इन द income statement. So that is why we actually divide the whole non-current asset की पूरी जो cost है उसको we split it over its life so that every year we charge a depreciation that is equivalent to the benefit that it is giving. तो अगर एक साल में एक पूरा साल हम यूज़ करते हैं कोई नॉन करंट एसेट और सम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ मोटर वैन. ठीक है. या मोटर वैन और अ डिलीवरी वैन. सो
इन दैट ईयर जितना उसने बेनिफिट दिया है उसके इक्विवेलेंट एक्सपेंस होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर हम पूरा एक्सपेंडिचर एज expense लिख देंगे तो that will go against the accruals and matching concept, one thing. And then expenses will be a very huge amount, so your profits will be very low. So that's not realistic, it's not true and fair. So that actually is not fair, um, logically as well. सही है. So if you see the methods of calculating depreciation, so we have a very very important method. तो सबसे पहले हमें यूजुअली अकाउंटिंग में ये सवाल पूछते हैं ये लोग कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. सो इफ़ दिस राइट स्टेट द कॉजेज, सो आप जो है वो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट टू मच, यू जस्ट राइट वेयर एंड टेयर. ठीक है, वेयर एंड टेयर है फर्स्ट, दूसरा ऑब्सोलेंस है, एंड बस. ठीक है, तीसरा एक डिप्लीशन है. डिप्लीशन इज़ इन द केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources deplete over time. So usually on our non-current assets, obsolescence and wear and tear fit the most. ठीक है, यहाँ पे आप अगर methods of depreciation देखें तो straight line method is also called an equal installment method. Why do we say it's an equal installment method? Because हर साल हमारी जो depreciation होती है वो सेम रहती है इसमें. ठीक है, वो चेंज नहीं होती. एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन इज़ द सेम. सो इफ़ आई फॉर एग्जांपल वांट टू डेप्रिशिएट माय फ़ोन, ठीक है, सो आई गॉट दिस फ़ोन फॉर 80,000. सही है, आई गॉट दिस फॉर 80,000, मतलब विद द टैक्स, विद द PTA एंड एवरीथिंग. एंड I estimate, okay, so what is the scrap value? I estimate that after using this phone for 4 years, मुझे इसके 10,000 रुपये मिल जाएंगे when I sell it in the market. So I say okay, 10,000 को माइनस कर देते हैं इसमें से. The formula tells you that you need to subtract the scrap value and you divide cost minus scrap value with the life. So I estimate I'll use it for 4 years. तो हर साल की हमारी depreciation आएगी 17,500. So every year हमारी depreciation होगी 17,500. and तो हम इसको एवरी ईयर, सो दिस फॉर पर ईयर, तो एक साल की डेप्रिसिएशन हमारी 17,500 है. इफ़ यू सी द क्वेश्चन, इफ़ द क्वेश्चन गिव्स यू cost of the non-current asset, the scrap value and the life, then you apply this formula and they are saying okay, straight line method use करना है आपको. अगर वो आपको ये सब नहीं देते हैं and they tell you कि for example 20% per annum on cost, सही है, तो आपको 20%, बेसिकली 20% यहाँ पे आपने 20%, एंड द कॉस्ट ऑफ द फ़ोन लाइक आई टोल्ड यू इज़ 80,000. तो 80,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 16,000. सो 16,000 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर एन ईयर. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट, वेरी वेरी ईजी. इफ़ यू सी द नेक्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस. इसको डिमिनिशिंग बैलेंस क्यों कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हर साल एक्सपेंस जो है वो कम होता रहता है. तो एवरी ईयर द एक्सपेंस विल रिड्यूस. ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट एक्सपेंस विल बी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द यूसेज ऑफ द नॉन करंट एसेट. तो अगर आप इफ़ आई टेक द सेम फ़ोन ऑफ माइन दैट इज़ फॉर 80,000 माइनस accumulated depreciation, so year 1 में the formula that you have to use is that you have to apply the percentage on net book value, not on cost. ठीक है, कॉस्ट में हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे. रिड्यूसिंग बैलेंस में आप हमेशा नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं. सो नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो कॉस्ट जो भी नॉन करंट एसेट की थी माइनस जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन इस नॉन करंट एसेट पे चार्ज कर दी है. ठीक है, सो अगर आप देखें फर्स्ट ईयर में तो मैंने कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की. इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डेप्रिशिएटिंग माई फोन. सो accumulated depreciation is 0 in the first year, and let's say the question is telling you 25% per annum. So you just say okay, 80,000 minus 0, that is the accumulated depreciation, multiplied by 25%, that gives you 20,000. तो ये 20,000 आ जाएगा. For year 2 what I have to do is that cost, what is the cost? The cost here is again 80,000 minus accumulated depreciation. मैंने फर्स्ट ईयर में depreciation कितनी चार्ज की है? That is 20,000 multiplied by 25%. So the net book value in year 2 is 60,000. 60,000 पे मैं 25% चार्ज करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 15,000.
In year 3 what I have to do is कि अब मैं दोबारा repeat करूँगी the same thing. 80,000 minus now the accumulated depreciation is the depreciation of year 1 and depreciation of year 2. तो now the accumulated depreciation is 35,000 और 35,000 को minus कर दिया multiplied by 25%. So what I get here is 45,000 multiplied by 25%. So I'm getting 11,250. ठीक है. इन ईयर 4 अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी वो 3 सालों की होगी. तो अगर आप यहाँ पे देखें ईयर 4 में 80,000 माइनस सो दिस इज़ 46,250. इसमें से हमने 80,000 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आएगा, उस पर 25% अप्लाई कर दिया डेप्रिसिएशन. सो 80,000 minus 46,250 multiplied by 25%. So that gives me a very odd answer, but it's fine. Let's take it. तो ये जो है points में आ रहा है आंसर, but it's fine. We can round it off. तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 8437.5. So I round it off to 8438. तो ये हमारी depreciation हो गई in year 4. ठीक है. So you can keep repeating the process for as many years as you want. उसका कोई मसला नहीं है, वो कर सकते हैं. ठीक है. But I'm doing it for 4 years, so that's how you do it. सही है. So that you know, you just know कि किस तरह हम calculate करते हैं. Okay. So if you see यहाँ पे depreciation की theory में the concepts we have to teach the students that there are 2 policies of depreciation which the CIE will give. ठीक है. अगर कोई भी depreciation का question होगा, they'll give you the method, they'll give you the percentage that you need to apply, and also they'll give you the policy. ठीक है. the policy here, तो the month by month policy जो है उसका मतलब ये होता है कि जिस महीने में आपने नॉन करंट एसेट खरीदा उस महीने से आप depreciation चार्ज करना शुरू करेंगे. If you haven't bought it in the first month, if for example you have bought the non-current asset in the 7th month, so for example January to December का ईयर है एंड आपने जुलाई में दिया है, तो जुलाई में ख़रीदा है, सो जुलाई 1 को ख़रीदा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, पूरे साल का नहीं होगा. ठीक है. जिस ईयर में परचेज़ किया उसमें सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा. Similarly, you have to see when you are disposing of the asset. So for example, you are disposing of the asset after 2 years and then you are again disposing it off on 30th June. ठीक है. So for example, you purchased it in 2019. तो 2019 में आपने जुलाई में ख़रीदा, तो 2019 में सिर्फ 6 months की depreciation होगी. In 2020 you use it for the whole year, so उसमें 12 months की depreciation होगी. And in 2021 for example, you again using the non-current asset for the whole year, तो उसमें भी 12 months की depreciation होगी. And in 2022 you sell it in June. For example 30th June को sell करते हैं, तो now in 2022 you have to charge a 6 months depreciation expense. ठीक है. on this non-current asset if the policy is month by month. Also one more thing very important, the CIE वाले जो है ना, इनके पास जो है they have a lot of ways in order to tell you कि भाई month by month policy यूज़ करनी है. इधर आप देखें the CIE examiners, they have a lot of ways to tell you that what policy you have to use. So month by month के बहुत सारे नाम हैं. So they can say part of the year the asset is owned. So if they write that in the question, so you should automatically understand कि ये month by month कह रहे हैं. सही है. क्योंकि that part of the year for which the asset is owned. ठीक है. The second policy is a full year's depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale. तो इसका मतलब ये है कि in the year of purchase, whenever you are purchasing, even if you are purchasing in the last month, charge a full year's depreciation in the year of purchase and don't charge any depreciation when you are in the year of sale. तो डिस्पोजल के ईयर में आप कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. इफ़ वी टेक द सेम एग्जांपल जो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसमें आई वाज टेलिंग यू कि हमने 2019 में नॉन करंट एसेट ख़रीदा है, 1 जुलाई को ख़रीदा है. अब 1 जुलाई को अगर ख़रीदा है तो इन द सेकंड पॉलिसी आप 2019 में फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2020 में फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2021 में फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एंड इन द ईयर ऑफ सेल इन 2022 यू विल चार्ज नो डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो
That's another policy, that's also very very important here. So if you see अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये लेजर अकाउंट्स बेसिकली. सो नॉमिनल लेजर के अंदर यू हैव दिस अकाउंट, इट्स कॉल्ड अ नॉन करंट एसेट अकाउंट. आई हैव रिटन नॉन करंट एसेट. By non-current asset, it's a broader definition, non-current asset, but obviously the non-current asset changes according to the question. So if any question, it can be on office equipment or furniture or fixtures or motor vehicle or van or whatever. सही है, तो जो है question के अंदर वो आपको यहाँ लिखना है. That will be your account title. And the balance will be, of course, assets have a balance brought down on the debit side. सही है, so assets increase on the debit side, decrease on the credit side. That is very very important, क्योंकि यहाँ पे ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू दिस अकाउंट वेरी वेल. तो बैलेंस यू पुट इट ऑन द डेबिट साइड. सो दिस इज़ द टोटल नॉन करंट एसेट, द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है. इफ़ यू सी ड्यूरिंग द ईयर यू माइट परचेज नॉन करंट एसेट. ठीक है, तो अगर आप नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट इज़, इफ़ यू सी यू माइट परचेज non-current assets during the year. So for example, you're purchasing non-current asset, तो आप motor vehicle, for example motor vehicle है, and the question tells you the business purchased another motor vehicle paying by check. So you write it over your debit side पे. Any additions in the non-current assets must be written on the debit side. Any subtractions from the non-current asset. So if you are selling a non-current asset during the year, you write it over here. सही है. And one more thing, very very important here is to note that all these values are always cost. तो जो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ऑल द नॉन करंट एसेट्स at the start of the year. So if it's motor vehicle, the cost of motor vehicles at the start of the year, this is the cost of the motor vehicle that you have purchased. ठीक है. ऑल्सो यू कैन परचेज इट ऑन क्रेडिट. तो जिससे आप ख़रीद रहे हैं ऑन क्रेडिट, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा अगर आप क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं. अगर आप कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, जितने का हमने ओरिजिनली ख़रीदा था, उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनी मोर. इफ़ यू सी द बैलेंस कैरिड डाउन विल टेल यू द टोटल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है. If you see the balance carried down, of course, becomes brought down for the next period. If you see the provision for depreciation account, you should know this, that provision for depreciation account is also called a contra asset account. Contra asset means it's an opposite of asset. Contra asset always reduces the value of the asset. ठीक है. तो cost of the asset की मतलब asset की value को reduce करेगा provision for depreciation. Also contra means opposite. तो अगर आपको, if you know the nature of the asset, it increases on the debit side and it decreases on the credit side. So obviously आपको contra का nature भी पता चलेगा कि contra जो है वो credit पे increase होगा और debit पे decrease होगा. Also one more thing to very very important here to note is that हम हमेशा as students, we would be confused in accumulated depreciation, the word accumulated, and the word provision. So provision is the account title, and in that account you are accumulating depreciation. So if you see the depreciation at the start of the year, जो ये depreciation है, ये depreciation accumulated depreciation at the start of the year है. तो जो ये particular non current asset है, अगर motor vehicle है तो हमने motor vehicle पे जितनी भी depreciation charge कर दी है, that will be at the start of the year. During the year we'll also charge another depreciation on the motor vehicle which we are using. ठीक है. तो पूरा साल जो हमने motor vehicle यूज़ की उस पर हम depreciation charge करेंगे. And we'll of course, if we are disposing of a motor vehicle, तो हम उसकी depreciation को we need to remove it. Why do we need to remove it? Because it's not part of our business anymore. हमने किसी और को ये non current asset बेच दिया है. ठीक है. तो बेचने के बाद obviously you need to remove it. तो ये अगर ये if this account increases on the credit side and decreases on the debit side, so you will see यहाँ से जो है remove आप यहीं से remove करेंगे, because that will actually remove the effect of the depreciations that you had for this non-current asset. ठीक है. So very important thing, ये जो disposal की value होगी ना, that will be accumulated depreciation ऑफ दैट एसेट. तो जो एसेट आपने बेचा है उसको उसकी accumulated depreciation. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि accumulated depreciation कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू नो कि आपने वो एसेट कब ख़रीदा था ओरिजिनली. जब भी ख़रीदा था वहाँ से you'll just ट्रैक दैट depreciation कि अच्छा ख़रीदने वाले ईयर में इतनी चार्ज की थी, फिर
एक और ईयर में यूज़ किया तो उतनी चार्ज की, फिर एक और ईयर में यूज़ किया तो उतनी डिप्रिसिएशन, एंड देन till the disposal. यहाँ पे policy is very important, because if you know the policy, if it's a month by month policy, you will have to see the months. सही है. And if it's not a month by month policy, if it's a full year depreciation in the year of purchase, none in the year of sales, and then it's easier. सही है. तो आप सिर्फ you don't see the month कि आपने किस महीने में ख़रीदा था. ठीक है. And then this value, then here this value is the accumulated depreciation at the end of the year. सही है. तो so obviously this part will be heavier, the credit side will be heavier, the debit side will be lighter. तो इन दोनों को ऐड करके जब डिस्पोजल की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. एंड देन दिस वैल्यू विल बी एक्चुअली नेक्स्ट पीरियड पे इसको हम बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट पीरियड. इफ़ यू सी the last account here, very important, is the disposal account. So अगर आपको if you can see this बहुत छोटा हो रहा है. तो हमने डिस्पोजल नॉन करंट एसेट के अकाउंट में डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे लिखा था. तो अब ये जो है दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड इन द डिस्पोजल अकाउंट, डबल एंट्री. ठीक है. एक अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट डेबिट हो रहा है. सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री हियर इज़ दैट व्हेन यू आर मेकिंग ओके डिस्पोजल्स पे ना जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं लोग. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज़ टू रिमूव द नॉन करंट एसेट. तो आप क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करते हैं, डिस्पोजल को डेबिट करते हैं. तो देखिए नॉन करंट एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है. The second is to remove the accumulated depreciation. So how do you remove the accumulated depreciation? You do provision for depreciation debit, you do disposal credit. So यहाँ पे देखें provision for depreciation में disposal debit पे आ रहा है and disposal में provision for depreciation credit पे आ रहा है. The third very important journal entry is bank debit, disposal credit. तो obviously जब आप जो नॉन करंट एसेट को बेचेंगे तो आपको जो है वो पैसे मिलेंगे. सही है. तो पैसे मिलेंगे, बैंक में आएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. एंड द लास्ट थिंग हियर इज़ देयर आर टू थिंग्स. यू कैन ईदर हैव अ लॉस ऑन अ डिस्पोजल एंड और यू कैन हैव अ प्रॉफिट. तो लॉस कैसे पता चलता है, प्रॉफिट कैसे पता चलता है? अगर आपकी नेटबुक वैल्यू, सो नेटबुक वैल्यू इज़ माई एस्टिमेट ऑफ माई नॉन करंट एसेट. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई थिंक ओके नाउ टुडे व्हेन इफ़ आई गो टू द मार्केट एंड सेल माई आईफोन, तो मुझे 45,000 मिल जाएंगे. दैट्स व्हाट माई एस्टिमेट इज़. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड द मार्केट वैल्यू इन द मार्केट द शॉपकीपर्स आर सेइंग टू मी, अच्छा आपको 43,000 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते. तो इसका मतलब एंड आई सेल इट फॉर 43,000. तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2,000 का लॉस हुआ है, बिकॉज मेरी एस्टिमेट थी 45 और मुझे मिले कितने 43. ठीक है. सो नेट बुक वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस. सो मार्केट वैल्यू इज़ द सेलिंग प्राइस. तो ये जो होता है वो लॉस होता है. अगर नेट बुक वैल्यू is less than the selling price, so I am estimating I'll get 45,000 and in the market I actually get 48,000. तो in that case मुझे 3,000 का profit हुआ है. So that is profit. ठीक है. If net book value is exactly equal to the selling price, then that's no profit, no loss. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपने ये पूरा अकाउंट बना लिया इस तरह से. एंड if the income statement is coming here, so that means it's a loss. If income statement is coming on the debit side, that means it's a profit. ठीक है. So that's it for depreciation and disposals. So if you know the policy, so if you see the whole thing, if you summarize the whole thing, it's causes of depreciation, what is the definition of depreciation, that is important. What are the methods of depreciation, need to know कि क्या क्या formulas हैं for each method. You should know the policies of depreciation, and then of course जो सवाल आएगा उसमें आपको depreciation की policy सही से पढ़नी है. ठीक है. and apply करनी है. and then obviously you should know the accounts. तो ledger account किस तरह बनाना है for all the three. And obviously journal entries are also important, but we'll do another video for the journal entries. Thank you so much.